Good evening, Mandusha. Let's wait for some more time. Just 2-3 minutes so that we can get started. Yeah, good evening. Just 2-3 minutes and we'll get started. Can you hear me, guys? Yes, sir. Okay, fine. Let's get started. So what I was saying is that the last topic is we need to discuss about the single phase induction motor. So this can be called as fractional HP motor, fractional HP or fractional kilowatt. क्योंकि इसका रेटिंग है ना बहुत कम होगा. So fractional HP, fractional kilowatt motor. Most of these fractional HP motors are single phase induction motors. So how the construction of induction motor will be here. And हमने 3-phase induction motor के बारे में discuss कर दिया पूरा, उसका construction भी देखा है. But here the construction is varies from one motor to other motor. Here just I'll consider the stator and rotor. For example, मान लो, and we have a construction. So what we normally do for 3-phase. So for 3-phase induction motor, so I'll be having a rotor and top of it the stator will be there. And इसको हम 3-phase supply देंगे, ये वाला 3-phase supply है. And the current will be going here now. This is for 3-phase induction motor. Single phase induction motor, yeah, same rotor will be there. I'll tell you the exact how the construction will be there. मान लो इधर स्टेटर है रोटर भी है, तो आप सप्लाई देना चाहिए लाइन एंड न्यूट्रल. ठीक है, that is a kind of I. And how the MMF will be there. Single phase है ना, हमने already देखा है MMF कैसे होगा इसका single phase का. So single phase का तो MMF होगा F equal to FM cos omega t cos theta, right? FM cos omega t cos theta. Hi guys, good evening guys. Amit, Sahu, Rohit and Neha guys. Yeah, happy that you're here for the last class. Okay, so MMF, what we do here now, FM cos omega t cos theta. ये कैसे लिख सकते हैं यार? MMF हमने 3-phase में क्या देखा है, इसका MMF कैसे आया? MMF for the flux will be FM cos theta minus omega t. इसका मतलब क्या होता है, जो भी magnet form हो गया, this is what is happening here now. The magnet formed on the stator or rotating, we already discussed this, north south, say omega t equal to 0 and omega t equal to 90. मान लो omega t equal to 90, the poles are being rotated. So this is north and south like this, and in the next position the poles are being rotating again, rotating magnetic field. I was talking about simple rotating magnetic field, either north south, omega t equal to say 180. तो क्या हो रहा है इधर, जो भी मैग्नेट स्टेटर के ऊपर फॉर्म हो गया, ये वाला मैग्नेट्स मतलब वर्चुअली मैग्नेट्स फॉर्म हो गया, and these magnets are rotating continuously, revolving on the stator. Virtually means that you hold 2 poles, magnetic poles, and then you mechanically rotating those 2 poles. That's a virtual meaning of that.
So that only happens only when the three-phase supply is given. In case of three-phase supply. लेकिन इधर single phase में क्या हो रहा है? We need to see in the single phase induction motor. Single phase में क्या हो रहा है? If you see here now, F equal to Fm by 2 and cos omega t cos theta. I would write this way. And how can you convert this 2 cos A cos B? And you can see here now, Fm by 2, I can write this one cos theta minus omega t and cos theta plus omega t. Mathematically, cos A cos B. So cos A plus B by 2 or 1 by 2, I can say A plus B cos A minus B. That's what I have written. इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मीनिंग इसका मतलब क्या होता है? प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. एक सिंगल फेज सप्लाई दिया, मैग्नेट बनना चाहिए इसके ऊपर. जो भी मैग्नेट बन गया वो वाला मैग्नेट रोटेट होना चाहिए. उसके साथ अगर जो भी मैग्नेट फॉर्म हो गया स्टेटर के ऊपर, अगर ये वाला मैग्नेट रोटेट होगा तभी उसके साथ रोटर भी घूमेगा. Otherwise, rotor will not rotate. Simple principle everywhere is that. Synchronous motor, DC motor is pushing, there is no revolving that. Now the induction motor. So any rotating motor is having AC motor, particularly is having a rotating magnetic field. So form होना चाहिए, वो वाला rotate होना चाहिए. लेकिन ये कैसे वाला form हो गया देख लेना please. I have Fm by 2 cos theta omega t. Fm by 2 cos theta plus omega t. दो rotating magnet field बन गए. Mathematically cos theta minus omega t is a rotating magnetic field. मतलब जो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा वाला फॉर्म होगा तभी हमको रोटर घूमेगा. लेकिन इधर सिंगल फेज में क्या हो रहा है? एक नहीं दो तो फॉर्म हो रहे हैं. लेकिन इसका नेचर कैसे होगा देख लेना. फिर इसका नेचर ऐसा होगा कि देखो दो मैग्नेट होगा, एक तो क्लॉकवाइज में जाने वाला है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में जाना वाला है. फॉर एग्जांपल हियर नाउ यू कैन सी MMF magnitude. This is of FM मान लो, ठीक है, of total MMF, or you can say flux also phi m. So एक फ्लक्स बन गया, दो फ्लक्स मैथमेटिकली दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में से जैसे हो गया. लेकिन ये दो में क्या है? एक तो क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है. वन इज काइंड ऑफ गोइंग इन द क्लॉकवाइज, अनदर वन इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है यार, एक क्लॉकवाइज में गया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? I have already drawn. So then from there I am trying to get the equivalent circuit of this also. When first one thing tell me, when this is rotating in the clockwise direction, same as a rotating magnetic field, a rotor is rotating in the same direction of rotating magnetic field. For example, like this, rotor and the poles formed both are in the same direction definitely. अगर ऐसा वाला गया तो S can be written as ns minus n by ns, है ना? तो you know this one. अगर opposite direction में, this is a forward slip, I would say. मतलब this is the one. There are two slips now. मतलब there are two equations for the slip. एक वाला आगे जाने वाला रोटेशन है, मतलब क्लॉकवाइज में जाने वाला रोटेशन है, उसके लिए ns माइनस n by ns है. दूसरा क्या है? बैकवर्ड में जाने वाला है SB है. उसको कैसे लिख सकते हैं? ns minus of minus n by ns. So this become backward slip ns plus n by ns. How mathematically can be written? Can you please validate this one? I can write this. So मतलब मैथम से अभी तक हमका मशीन कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, हमने अभी तक नहीं देखा. मैंने खाली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. मतलब can I make this waveform which is called as a pulsating waveform as a rotating magnetic field? Only I am trying to verify a single phase, if the single phase can become a rotating magnetic field or not. That's all. For that I am doing a mathematical treatment here now. Yes, if you find that it's yes single phase वाला mathematically three phase rotating magnetic field हो सकता है, तो तभी हम जाके machine को डिजाइन करेंगे. Then we'll do that, how the rotor torque is being generated. So this is what I am doing here now. One pulsating MMF.
This is called as a pulsating MMF. I'll explain what is a pulsating MMF. Just hold on for a minute. This is pulsating MMF or standing MMF. We call it as a standing MMF. So if pulsating MMF, standing MMF can be formed as a rotating MMF. That's my question. Yes, boss, pulsating and standing MMF can form as two rotating magnetic field, not just one. One is rotating in the clockwise direction, which is of SF. Another one is rotating in the backward direction, which is of 2 minus SF here now. This is the SB. One is here now, and another one is kind of SF. I know this is the one. ठीक है यार, मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेगा? खाली सिंगल एस हुआ तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? थ्री फेज में क्या होगा? सिंगल फेज में क्या होगा? लेट मी डू दैट हियर नाउ. या प्लीज कॉपी दिस पॉइंट हियर नाउ. एक पॉइंट लिख देना प्लीज आप बस. स्टैंडिंग एमएमएफ और पल्सेटिंग एमएमएफ, एक पॉइंट लिख देना प्लीज. By the way, can you hear me properly? No network issue. By the way, guys, is this fine? My voice is audible, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Good. Thanks. Yeah, guys, then please write a point over here. A standing MMF. Yeah, cool, guys. Yeah. Yes, sir, cool. A standing MMF or pulsating MMF can be converted into standing MMF or pulsating MMF can be converted into two rotating magnetic fields. Two rotating magnetic fields. One is rotating in clockwise direction. One is rotating in the clockwise direction with the slip SF. And another one is rotating with the slip SB. Another one is rotating with the slip SB in opposite direction. SB in opposite direction. So mention that SB equal to 2 minus SF. SB equal to 2 minus SF. ठीक है? ठीक है, तो दिक्कत क्या है यार मैथमेटिकली? सो इधर कंक्लूजन क्या है? प्लीज ध्यान से सुन लेना प्लीज. ए सिंपल पॉइंट हियर नाउ. ठीक है यार, आपने सिंगल फेज दे रही, अगर थ्री फेज दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऐसा वाला, पोल्स इसके ऊपर बन जाएगा, जो भी पोल्स फॉर्म हो गया वो वाला घूमेगा, स्टेटर के ऊपर घूमेगा कंटिन्यूअसली ऐसा, ताकि आपका रोटर भी उसके साथ पीछे पीछे पड़ जाएगा, पीछे पीछे घूमेगा विद द स्पीड ऑफ एन. इधर भी मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म हो रहे, लेकिन कैसे फॉर्म हो रहे देखो, एक तो आगे जाना वाला है, दूसरा पीछे जाना वाला है, रोटेट होने वाला है. तो क्या दिक्कत क्या होगा यार? अगर ऐसा वाला फॉर्म होगा तो दिक्कत क्या होगा देख लेना प्लीज. So for that, let me see the three-phase induction motor equivalent circuit. I'm just recalling that. Kyunki, what is a three-phase induction motor? Three-phase induction motor equivalent circuit. Three-phase induction motor equivalent circuit. क्या है? हमने already देखा है इसको. Okay. Do you agree with me? So if you imagine ये वाला stator है, this is what the stator. This is a in between one magnetizing flux. This is what the rotor. So what I'm doing here now, since I have a two rotating magnetic fields, I'll equate this entire portion into one with respect to the forward direction, other with respect to the backward direction.
मतलब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? Let me see here now. So one slip is with the SF, another one is slip with SB. ठीक है? So उसके साथ क्या होगा देख लेना please. So I can redraw this structure. Stator let it be there, and I'm making this as equating to the off. One is with the forward slip, another with the backward slip. So this becomes here now x2 dash by 2, and this becomes here now with respect to the forward one r2 dash by 2 SF. Resistance को आधा कर रहा हूँ रोटर का, reactance भी आधा कर दिया मैंने, right? Yes, definitely this also you make it off. And then second portion is I'm making this same thing. Second portion you can right. So what we can JXM by 2, and this is R2 dash by 2. इसका स्लिप क्या है? इसका स्लिप क्या होगा? 2 minus SF, क्योंकि ये वाला पीछे जाने वाला है ना. So then this is X2 dash by 2. Total supply voltage, look at here now, total current, and this R1 JX1 here now. ये तो प्रॉब्लम क्या है? इधर दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहे, करस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या होगा? अगर मान लो 3 फेज में टॉर्क क्या हो गया? व्हाट इज द टॉर्क इन द 3 फेज वन? I'll say torque in 3 phase, so which is 3 by omega s I2 dash square and R2 dash by s. Do you agree with me? This is the slip in torque in 3 phase. Single phase में दो टॉर्क आ गए इधर, so एक वाला टॉर्क है फॉरवर्ड टॉर्क which is equal to single phase 1 by omega s. मान लो some current I am making here now, the current which is going to say I2 dash, same I am just making here now, I2 dash R2 dash, resistance क्या है? R2 dash by 2 SF. Backward torque है, this is corresponds to backward torque, ये वाला portion, and this one corresponds to the one which I have drawn on the top. ये वाला भी जो भी तक हमने draw कर रहे हैं ये वाला forward torque के लिए. ठीक है, forward torque वाली equation यही है, 1 by omega s I2 dash R2 by 2s, of course square हो गया इधर. So backward torque वाला क्या होगा? 1 by omega s, yes the same current, yes definitely same current has to go, and square of it R2 dash by 2. Please understand the difference. इधर difference क्या होगा? पहले तो मैंने SF लिखा है which belongs to the forward slip, and उसके बाद इधर देखो कौन सा वाला slip लिखना चाहिए? 2 minus SF which is a backward slip here. एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना इधर, अरे मशीन के ऊपर हम दो टॉर्क बन गए इधर, दो टॉर्क बन गया मतलब मशीन दो बंदे रोटर को घूमने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ये वाला 3 फेज में क्या चल रहा है? इधर एक ही बंदा इधर पड़ा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे निकल रहे, उसके साथ रोटर को लेके जाएगा तो रोटर रोटेट हो जाएगा. लेकिन इधर क्या हो रहा है? दो बंदा पड़ा है इधर, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक वाला रोटर को आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे, उसको तो पीछे लेके जाने का कोशिश कर रहे. इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है? कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? कौन सा मतलब जोर से पुश करेगा? वो वाला का टॉर्क ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या होगा ये नाउ, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्टार्टिंग किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका टॉर्क होगा? इट्स समथिंग लाइक अ टग ऑफ वॉर व्हाट यू आर डूइंग. मतलब उधर 10 लोग खड़ा है तो पकड़ लिया, एंड इधर 10 लोग खड़ा है तो किसके ओर, वो तो जो भी पकड़ लिया आपने तो किसके ओर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सो रोटर के ऊपर टॉर्क बन गया, एक वाला आगे से एक वाला पीछे से. सो नाउ लेट अस सी हियर नाउ स्टार्टिंग में क्या होगा. स्टार्टिंग का स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल टू 0. तो स्लिप कितना है? अब बस फॉरवर्ड स्लिप बैकवर्ड स्लिप कैलकुलेट करना. सो फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा? ns माइनस n बाई ns, n 0 हो जाएगा इधर, स्लिप 1 है. बैकवर्ड स्लिप क्या है मैंने बता दी ऑलरेडी, 2 माइनस SF, 2 माइनस 1 1. तो टॉर्क क्या हो गया इधर? फॉरवर्ड टॉर्क SF इक्वल टू 1, 2 माइनस SF इक्वल टू 1. तो फॉरवर्ड टॉर्क एंड बैकवर्ड टॉर्क बोथ आर इक्वल. अरे यही दिक्कत आ गया यार, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में यही दिक्कत आ जाएगा.
दिक्कत क्या है कि मतलब ये वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टॉर्क बराबर है। अगर ये वाला टॉर्क बराबर ही हुआ तो मोटर घूमेगा नहीं, दोनों अरे एक प्रेशर से। समझ गए ना बात? डिड यू गेट दिस पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? या did you get this point, guys? So yeah, forward torque and backward torque both are kind of equal. So hence induction motor is not self-starting. And one second, please write down this point here now. Please write down this point. So starting torque, forward torque and backward torque. Starting torque, forward and backward torque, both are equal. Only one second, please. I think please mention this point. Forward torque, backward torque, both are equal. So induction motor is not self-starting motor. Please mention that point. Single phase induction motor is not self-starting. Okay, let me show the characteristics here. Characteristics, let me show here now how this will be. So forward torque, three phase में हमने देखा है. Okay. मैं कुछ मुझे approach कर रहा हूँ. So torque और slip characteristics है, ये वाला forward है, and this is a kind of backward. ठीक है? तो forward slip मतलब starting वाला कितना होगा? Speed 0 है, तो SC equal to 1. Let me draw the forward slip here now. How the characteristics will look like same as what we drawn for three phase. And this is forward torque. Backward torque वाला कैसे होगा यार? I'm just showing based on the expression. TF का expression I know it. This is based on this one I'm drawing. Right? And what about the backward one? Backward one is something like here. Have you observed one point? Starting में, please understand, at S equal to 1, at S equal to 1, that is N equal to 0, forward torque, backward torque, both are equal. So resultant torque is TF difference TB, which is equal to 0 here now. So resultant torque equation, let me draw here. Resultant torque wala curve, let me draw here now. ये दोनों resultant कैसे होगा? I'm just trying to draw. This is how the characteristics. This is TR. So starting, you can see here now, TR is 0. Hence, single phase induction motor is not a self-starting induction motor. It required a help. So कुछ तो देना पड़ेगा यार. हम क्या करना है? ये वाला induction motor को तो चालू करने के लिए कुछ help तो चाहिए. So what we do here now, we'll make another winding, something called auxiliary winding. So let us do that one.
So let us do that one. For the auxiliary winding, we need to have one more winding here now. Let me draw that. The setup that I have is, for example, 2 windings I have. Shall I clear this one? Shall I clear? Okay. Let me do that. Yes, sir. Cool. And what about others? I'm just clearing this one. Is that fine? Yes, Rohit. Cool. So what I'm doing here now, to make single phase induction motor self-start. To make induction motor, single phase induction motor self-start. What I'm doing here now, auxiliary winding is used. How are we doing the auxiliary winding here now? For this, I'll take the first motor is resistance split phase motor. First one is resistance split phase induction motor. Where do you find this one here? This single phase induction motor, all your kitchen work, mixies, grinders, and fan, all these are kind of single phase induction motors. So how do you make, or how do you get a kind of torque on this induction motor? Why the fan is getting rotated? So let us see here now what is happening. For example, इसमें rotor है, मैंने ये वाला main winding है, main winding को सप्लाई दिया मैंने, line and neutral. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको auxiliary winding, एक और winding, both spatially and angle wise. This is R and X. So this is main winding and auxiliary winding. What will happen here? This is F1 and this is F2. For example, F1 is equal to Fm, main flux है ना, इसमें जाने वाला. Fm cos omega t cos theta. F2 is resistance है ना. Resistance will have, we can see the voltage and the current will have a phase difference of 90 degree here now. So what I can do here now, there is a time difference of 90. क्योंकि इसमें जाने वाला करंट, इसमें जाने वाला करंट 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला इंडक्टर है, ये वाला रेसिस्टर है. Angle between these two currents will have a 90. Basics of network, and we can discuss in network in detail. Don't worry about that. And cos omega t minus or theta minus, rather I would say cos theta minus 90. ये दोनों रखा मैंने. F total क्या होगा यार? F1 plus F2 कर दिया तो, so you'll be obtaining a Fm cos theta minus omega t, which is a unidirectional rotating magnetic field. Unidirectional rotating magnetic field आ जाएगा. We don't have two rotating magnetic field. एक बार unidirectional मतलब ये वाला SF में एक बार SF ज्यादा हो गया, characteristics आपने देखा है, resultant TR 0 और लेकिन अभी only forwarding torque है. So then what will happen here now? Forwarding torque में. So torque slip characteristics if we draw here now, and what are we doing here now? Only forward torque I have. If auxiliary and main winding both are there, this is the actual resultant without auxiliary winding. These are the characteristics that I have drawn already. Without auxiliary winding, these are the characteristics. Only main winding. लेकिन starting में 0 है इसका. So starting torque 0 नहीं होना चाहिए. इसके लिए मैंने ऐसा auxiliary winding रखा है. So ताकि अभी characteristics क्या होगा? Resultant torque is some value, and these characteristics are main winding and auxiliary winding. Now what I do here now, अभी क्या हो गया यार, एक बार टॉर्क बढ़ गया तो इनिशियली 0 है, वही दिक्कत है. अगर मान लो इनिशियली 0 नहीं तो बोथ आर क्या है, बोथ आर इक्वल, इनिशियली 0 है. अगर एक बार एक टॉर्क को ज्यादा कर दिया आपने, फॉरवर्डिंग टॉर्क को, फॉरवर्डिंग टॉर्क बढ़ता रहता है.
मतलब आप इधर देख लेना, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया आपको, फॉरवर्डिंग टॉर्क मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया है आपको. So you can see it now. This is the forward torque and this one is a backward torque. दोनों बराबर है. जब आपने आगे जा रहे TF बढ़ रहा है, TB घटेगा वाला. समझ गए बात? Once this get decreased here now, once this is increasing, other one, then there is no problem. Only problem at the beginning. Beginning में ये दूसरे को ज्यादा करना चाहिए बस. That is done by the auxiliary winding, a resistance split phase induction motor. Okay, fine, then you got it. Then open this one here. So just to open this one, auxiliary winding. Just to open this one, then you will have only main winding will operate here. लेकिन इसका टॉर्क है ना, स्टार्टिंग टॉर्क कम है क्योंकि रेसिस्टर रखा है, एंगल कम होगा. इफ यू लुक एट हियर ना वोल्टेज, टॉर्क कैसे होगा देखो. वोल्टेज इधर है, मान लो इसमें जाने वाला करंट I1 है, इसमें जाने वाला करंट I2 है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गया? वोल्टेज इज हियर नाउ, I1 will be ideally speaking 90 degree lagging होना चाहिए, but that's not ideal. Inductor is not ideal. Resistor current is supposed to be in phase, but that's not ideal. Current will be lagging. So this is the scenario. So actually phi torque is proportional to I1 I2 sin phi or sin theta. Theta बहुत कम है. इसलिए what we do here now, we use a second motor which is called as a capacitor split phase. Capacitor split phase induction motor. What we do in this capacitor split phase induction motor, instead of resistance, I'll keep a capacitor. Meaning here now, we just keep a capacitor. And of course, I have here now, just switch is to open that. This is a capacitor. And line and neutral. समझ गए ना बात? Right? Otherwise, I'll draw next one. You please copy this one. Okay. I'll draw on the next page. So let us see only one here. In resistance phase induction motor, you can mention starting torque is less. Torque high, starting torque non-zero है, लेकिन कम है. उसको बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. तो कैसे करें? So how do we make that? So let us do that. Resist capacitance split phase induction motor. Mention here. So what I do here now, torque. See here now how the torque will be more. Voltage.
इंडक्टर आइडियली स्पीकिंग करंट लैग होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 लैग होना चाहिए, बट नॉन आइडियल सो समवेयर अराउंड 50-60 डिग्री I1। कैपेसिटर है, करंट लीड होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन एग्जैक्ट कैपेसिटर नहीं है, आइडियल नहीं है, तो लीड डेफिनेटली इट विल लीड। सो दिस विल ये वाला एंगल है ना अभी ज्यादा है compared to the previous one. Torque is proportional to two fluxes or currents I1 I2 sine of angle between this or corresponding fluxes I can write. Definitely this torque is more than the previous one. So I'll draw this torque versus slip characteristics. Definitely you can see here now starting torque is high, and if you don't have auxiliary winding, your characteristics are like this. This is only main winding. Now just take out this. This is with auxiliary winding plus main winding. Open here, open auxiliary winding. Then your characteristics fall on to main winding one. So your this is a starting torque zyada hai. You can see here now T start is more in the capacitor split phase. So third one is capacitor permanent. So third one is capacitor permanent induction motor. Capacitor permanent can you hear me guys? So permanent means capacitor is permanently kept. So that's the third one what we have in the induction motor. So where you permanently keep the capacitor, why do you want to take out? Kyunki wala power factor improve karega. So that's the reason we keep that permanent capacitor. Third one. So the third one, see, if you have a ceiling fan, I mean, you remember the ceiling fan, sometimes the fan will not rotate. तो आप क्या करेंगे यार, फैन घूमेगा नहीं कभी कभी. So what you do there? So switch on कर दिया, फिर भी घूमेगा नहीं फैन, तभी क्या कर हाथ से करेगा. So what that you are doing here now? When the auxiliary winding is gone, when capacitor is gone, when condenser of the fan is gone, so then what happens is that auxiliary winding is gone. So the torque, starting torque में zero हो जाएगा. Starting torque में दो चीज होगा, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क दोनों बराबर होगा. तो आपने क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं, इसलिए the forward torque will be more than the backward torque. One side torque will be more than the other side. Then the fan started rotating. So you are acting as a auxiliary winding there. Okay. That one is capacitor permanent induction motor, the ceiling fan which we are using. So please copy this one.
Okay, guys, then I mean that's all we have for machines. And with this, the single phase is done, and we finished the electrical machines. Yeah. So from tomorrow onwards, we are left with only the network analysis. So कल से 3 बजे से class होगा. So 3 to 5 we'll try to do. And parallel transition machines are done. Okay. Okay, then I'll stop here now. So you may leave the class if you want. If you have any doubts, you can check with me. I'll be online for some more time. Okay then. Bye bye, guys then.